Chapter 3 Advanced MS Word 2021 Mail Merge. Hello, Priyam. Have you make a list of persons to whom you invite for your birthday party? Hello, D. No. Why don't you make a list on MS Word? Oh, really? Of course. Even you can send the invitation to multiple people at a time using Word. Come with me. Let us see how. Okay, D. Mail Merge. The Mail Merge feature of Word is used to create personalized letters for bulk mailing in a short period of time. It combines a data source which has all the addresses with the main document. Word का मेल मर्ज फीचर बड़ी संख्या में व्यक्तिगत पत्र जल्दी तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक डेटा स्रोत, डेटा सोर्स, जिसमें सभी पते होते हैं, को मुख्य दस्तावेज, मेन डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ा जाता है। Following are the three main components of mail merge. Data source. Data source consists of a mailing list, for example, name, address, city, PIN code, telephone number, etc. In it, the data is organized in tabular form along with the field names. A record is a row in a datasheet. A number of fields make one record. The data source is associated with the main document so that its field names can be used in the main document, and it becomes easy to merge addresses with the main document. मेल मर्ज के तीन मुख्य घटक है। डेटा स्रोत, डेटा सोर्स। इसमें नाम, पता, शहर, पिन कोड, टेलीफोन नंबर आदि की सूची होती है। यह डेटा तालिका के रूप में व्यवस्थित होता है। हर पंक्ति एक रिकॉर्ड होती है। इस डेटा स्रोत को मुख्य दस्तावेज से जोड़ा जाता है ताकि उसमें से फील्ड नाम लिए जा सकें। मेन डॉक्यूमेंट. It contains the text that you wish to send to all the recipients. Merge fields. A merge field is a data item, such as name, address, city, PIN, etc., which instructs Word about where to insert the data source information, names, addresses, in the main document. Mail merge involves three basic steps. Creating a main document. Specifying a data source. Merging the data source with the main document. मुख्य दस्तावेज. ये वो पत्र या सामग्री होती है जिसे आप सभी को भेजना चाहते हैं. मर्ज फील्ड्स जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, पिन आदि. यह वर्ड को बताते हैं कि कहां पर कौन सा डेटा जोड़ा जाए. मेल मर्ज की तीन मूलभूत प्रक्रियाएं. मुख्य दस्तावेज बनाना, डेटा स्रोत बताना, डेटा को मुख्य दस्तावेज से मर्ज करना. Creating a main document. To create a main document, follow the given steps. 1. Open a new document to type a letter or open an existing letter in Microsoft Word that you want to send to different people at their addresses. To click on the Mailings tab. In the Start Mail Merge group, click on the Start Mail Merge drop-down arrow and select the Step-by-Step Mail Merge Wizard option. 3. The Mail Merge task pane appears on the right side of the application window. Now, select the Letters radio button under the Select Document Type section. 4. Click on the Next Starting Document Wizard step under Step 1 of 6 section at the bottom of the task pane. 5. Choose the type of setup for your letters. 6. Click on Use the Current Document radio button under the Select Starting Document section. 7. Click on Next. Select Recipients under the Step 2 of 6 section. Creating a list of recipients. Data source. To create a new data source or address list, follow these steps. 1. Select the type A New List radio button under the Select Recipient section in the Mail Merge task pane. Click on the Create option. 2. The New Address List dialog box appears on the screen. Click on the Customize Columns button to add or remove fields. Type a new list विकल्प चुनें और Create पर क्लिक करें. New Address List dialog box खुलेगा. Customize Column से fields जोड़ें या हटाएं. 3.
Enter data in the respective fields and click on the New Entry button located at the bottom left of the dialog box. 4. Enter records of your friends and relatives. Click on OK. 5. You will get the Save Address List dialog box. 6. Specify a name in the file name text box and click on the Save button. सभी जानकारियां भरें और न्यू एंट्री पर क्लिक करें। सभी रिकॉर्ड भरें और ओके पर क्लिक करें। सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में फाइल का नाम दें और सेव करें। 7. The Mail Merge Recipients dialog box will appear. This dialog box displays the details of all the records added by you. 8. To change any detail, you can select the data source in the data source box and click on the edit button. When you are through, click on OK. 9. By default, tick marks are placed on the checkboxes next to the data source field. It gives an indication that the records are selected. 10. If you do not want to send the letter to a particular address, click on that specific checkbox to deselect it. Click on OK. 11. Now, click on the Next. Write your letter, Wizard step, under the Step 3 of 6 section in the Mail Merge task pane and type a letter in the main document. Mail Merge Recipients बॉक्स में सभी रिकॉर्ड्स दिखेंगे। किसी डेटा को बदलने के लिए एडिट पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से सभी रिकॉर्ड्स चुने जाते हैं। अगर किसी को हटाना है तो उस चेक बॉक्स से चयन हटाएं। फिर नेक्स्ट, राइट योर लेटर पर क्लिक करें और पत्र टाइप करें। Inserting merge fields. To merge an address block in your document, follow the given steps. 1. Place the cursor at the position where you want to insert the address block. 2. Click on the address block option in the Write Your Letter section as shown in the figure. 3. The Insert Address Block dialog box appears. 4. Select any desired format in which you want to insert the address block. You can preview the format in the Preview section of the dialog box. Click on OK. 5. You can observe that address block is displayed in your document. 6. Now, to insert the salutation in your document, you can click on the Greeting line option, present below the address block option in the Write Your Letter section. Merge field डालना. Inserting merge fields. जहाँ पता डालना है, वहाँ कर्सर रखें। एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करें। फॉर्मेट चुनें और ओके करें। अब आपके दस्तावेज में एड्रेस ब्लॉक दिखाई देगा। 7. The Insert Greeting Line dialog box appears. Select any desired format and click on OK. अभिवादन के लिए ग्रीटिंग लाइन पर क्लिक करें और विकल्प चुनें। Viewing the merged data. You can check whether Microsoft Word has picked up the data source according to the merged fields or not by previewing your letters. For this, follow these steps. 1. Click the Next. Preview your letters, Wizard step, under the Step 4 of 6 section. 2. The first record will be displayed. Click on the Next Record Preview Results group to view the next record of the data source. मर्ज किए गए डेटा को देखना पर क्लिक करें। पहला रिकॉर्ड दिखेगा। अगले रिकॉर्ड के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करें। Printing the letters. You can take the printouts of your letter with the merged data of your data source. In order to print the letters, follow the given steps. X. 1. Click on the Next. Complete the Merge Wizard step under the Step 5 of 6 section in the Task pane and then click on the Print option in the Merge section. 2. The Merge to Printer dialog box will appear. Define the desired print settings and click on OK. 3. The selected records will be printed separately along with the letter. पत्रों को प्रिंट करना. Next, Complete the Merge पर क्लिक करें और फिर Print विकल्प चुनें. Merge to Printer डायलॉग बॉक्स खुलेगा. प्रिंट सेटिंग्स करें और OK पर क्लिक करें. सभी चयनित रिकॉर्ड्स के पत्र अलग-अलग प्रिंट हो जाएंगे.